हेलो वेलकम। एक्चुअली एनपीटेल का जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, इंट्रोडक्शन टू आईओटी, सो ये कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये जनवरी टू अप्रैल बैच का 2025 का। सो कॉन्सेप्ट थोड़ा आज देखेंगे, आईओटी क्या है और इसका मतलब किसको आईओटी का सेंसर किसको बोलते हैं। ओके, सो आईओटी सेंसर क्या है, आईओटी क्या है, ओके, एंड इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा। ओके, सो ये सब कॉन्सेप्ट देखेंगे और वीक जो असाइनमेंट भी थोड़ा देख लेंगे। ये काउंट नहीं होगा, फिर भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो इंट्रोडक्शन टू आईओटी, ओके, एनपीटीएल का कोर्स है ये। सो इंट्रोडक्शन टू आईओटी, ओके, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इसका अबाउट द कोर्स है इंटरनेट ऑडियंस मीन्स टारगेट ऑडियंस क्या है, कौन कौन है, कौन कौन कोर्स कर सकता है। सीएससी, आईटी, सी डबल ई, इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ओके, सो प्री रिक्विजिट्स क्या है, बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज और कुछ नहीं। ओके, ये इंस्ट्रक्टर है। ओके, ये सारे कुछ पढ़ाएंगे आपको, हम सिर्फ असाइनमेंट करेंगे। ओके, तो कोर्स टाइप इलेक्टिव कोर्स है, कोर्स लेवल यूजी या पीजी कोई भी कर सकता है। कोर्स लेआउट टोटल 12 वीक का कोर्स है। वीक 1 वीक 2 से लेकर वीक 12 तक सारे हम असाइनमेंट करेंगे। ओके, सो ये कुछ रेफरेंस है और एक क्राइटेरिया सर्टिफिकेट बनने का। ओके, सो वीक 0 का, ओके, ये काउंट नहीं होगा, पहले से मैं बोल देता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो इसको जानने से पहले, ओके, तो पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन टू आईओटी मीन्स इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक्चुअली इंटरनेट ऑफ थिंग्स refers to network of interconnected devices that communicate and exchange data with each other over the internet. Means it is the network of interconnected devices, okay, that communicate and exchange the data with each other via internet. Okay, so these devices can range from simple sensors. So generally sensors means the इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। और जनरली सेंसर्स क्या है कि सेंसर्स आर यूज्ड फॉर सेंसिंग थिंग्स, ओके, एंड डिवाइसेस एक्सेट्रा। ओके, ये सिंपल सेंसर का डेफिनेशन है। ये सेंसर्स आर यूज्ड फॉर सेंसिंग थिंग्स एंड डिवाइसेस एक्सेट्रा। सो आईओटी सेंसर क्या है? इट इज एम्बेडेड ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। ओके, सो आईओटी सेंसर क्या है? It is the physical devices that monitors and collected data from the environment. Let's say हम स्मार्ट वॉचेस सब लोग वेयर करते हैं, स्मार्ट वॉचेस। सो लेट्स से टेम्परेचर सेंसर। ओके, सो टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा? टेम्परेचर सेंसर इट सेंसर्स द इट सेंसेस द टेम्परेचर एंड मेजर्स द टेम्परेचर। ओके, मतलब ये सेंस करेगा और क्या टेम्परेचर है मतलब वेदर में वो बता देगा आपको। ओके, so ranges for simple sensors and household appliances, okay, let's say smart home, okay, to complex industrial machinery and healthcare systems, जिसको बोलते हैं IIoT मीन्स इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये सब देखेंगे। ओके, सारे वीक्स में एक एक करके देखेंगे। सो IoT एम्स टू मेक सिस्टम स्मार्टर। ओके, जैसे वॉचेस का, जैसे हम सिंपल वॉचेस का स्मार्ट वर्जन स्मार्ट वॉचेस। सो IoT aims to make systems smarter, more efficient, and capable of automating processes to enhance human lives and businesses. Okay, यह IoT का इंट्रोडक्शन था। सो की फीचर्स ऑफ IoT क्या है? सो फीचर्स ऑफ IoT मीन्स IoT का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा? नंबर 1 होगा, हम यहाँ पे 5 लिए हैं बेसिक सा।
or important one, connectivity. So connectivity refers to the devices are interconnected via internet to share data. सिंपल है. सेकेंड, ऑटोमेशन. ऑटोमेशन क्या होगा? मीन्स सारे कुछ ऑटोमेटिकली होगा. सो IoT enables devices to operate with minimal human intervention. मीन्स ह्यूमन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा. ओके. थर्ड, रियल टाइम डाटा. सो रियल टाइम डाटा ये होगा कि IoT systems provide instant updates and analytics from devices. Scalability means क्या है? Scalability means IoT networks can expand, okay, can expand to include more devices and functionalities. Means enhancement of networks. Scalability means क्या है? Enhancement of the networks, large networks. Okay. Fifth, integration. So integrate means हम integrate करेंगे. IoT integrates various technologies such as cloud computing, artificial intelligence, and machine learning. Okay. So components of IoT क्या होगा? सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ये सब सारे देखेंगे, ये सब बेसिक्स है. सो इसको बेसिक्स को जानो. कलेक्ट डाटा एंड परफॉर्म एक्शंस. डाटा कलेक्ट करेगा एंड एक्शन को परफॉर्म करेगा, बेसिक चीज है. सेकंड, कनेक्टिविटी. सो कनेक्टिविटी मींस मतलब कनेक्ट कैसे होगा IoT डिवाइसेस. नेटवर्क्स लाइक वाईफाई मींस वायरलेस फिडेलिटी, देन ब्लूटूथ एंड सेलुलर कनेक्टिंग डिवाइसेस. ओके. थर्ड, डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग कैसे होगा? क्लाउड्स और एज कंप्यूटिंग systems analyze collected data and user interface. Fourth, dashboards or apps allow users to monitor and control IoT devices. Then applications of IoT क्या होगा? Smart home, healthcare, agriculture, industry, that is industrial IoT, Internet of Things, then transportation. Okay. सो IoT क्या है, IoT क्या है हम देखेंगे. ओके. सिंपल IoT क्या है एंड IIoT मींस IoT का एडवांस वर्जन. ओके. एक किस्म से हम बोल सकते हैं इसको इंडस्ट्रियल IoT. मतलब सारे कुछ चीज को हम इंटीग्रेट करेंगे स्मार्ट सिस्टम में. ओके. ठीक है. सो ये एप्लीकेशंस था. देन बेनिफिट्स क्या होगा IoT का? एनहांस्ड इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, देन इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग थ्रू डाटा इनसाइट्स, देन कॉस्ट सेविंग्स बाय ऑटोमेशन एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. ओके. मीन्स ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होगा? ह्यूमंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पूरा कम हो जाएगा. हम ऑटोमेटिकल मतलब ये क्या करेंगे हम. ओके. इसके वो क्या होगा? कॉस्ट सेविंग होगा बाय ऑटोमेशन एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस. देन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशन. देन चैलेंजेस इन IoT. सिक्योरिटी रिस्क है. vulnerabilities in connected device. vulnerabilities क्या है? weakness of a system. then data privacy. ओके. ये सिक्योरिटी पार्ट सब हो जाएगा. ओके. डाटा प्राइवेसी जो सिक्योरिटी पार्ट. रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ पर्सनल और सेंसिटिव डाटा. देन इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स. मतलब इंटरऑपरेबिलिटी मींस क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी मींस क्या होगा कि हमारा जैसे बोल सकते हैं इसको the ability of different devices. Okay. The ability of different devices, systems and platforms to work together within the same ecosystem. Okay. So different devices, okay, or systems and platforms to work together in the same ecosystem. Okay. इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी इन IoT. ओके. सेम इकोसिस्टम में ये काम करेगा सारी चीज जितना भी डिफरेंट डिवाइसेस एंड सिस्टम्स है. ओके. एंड स्केलेबिलिटी मैं बोल चुका हूँ कि मैनेजिंग लार्ज नेटवर्क्स ऑफ डिवाइसेस इफेक्टिवली. ओके. एनहांसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स. एनहांसमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क्स, दैट इज स्केलेबिलिटी. ये सारे कुछ बेसिक्स था. ओके. देन वीक जीरो असाइनमेंट हम देखेंगे. ओके. ये सब सारी चीज देखेंगे. बेसिक्स है. RFID क्या है, सेंसर, एक्चुएटर, ये सब देखेंगे हम. ये सिर्फ बेसिक्स है थोड़ा. ओके. सारी चीज हम कवर करेंगे वीक 1 to वीक 12. क्वेश्चन नंबर 1, which
of the following allows us to identify objects and extract information. Okay, सो इसको क्या बोलते हैं? आरएफआईडी। आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होगा? इट इज ए टेक्नोलॉजी दैट allows us to identify objects and extract information through the use of RFID tags and readers। सारी चीज देखेंगे आरएफआईडी का मैकेनिज्म क्या है। अभी फर्स्टली याद रखो आरएफआईडी का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। सो okay, RFID tags contains electronically stored information which can be read wirelessly by an RFID reader, enabling automatic identification and tracking of objects। Okay, सो इसका फिलहाल ऑप्शन हो जाएगा RFID, ऑप्शन नंबर ए। अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेंसर था, सेंसर्स। सो सेंसर्स क्या है? सेंसर्स डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल फिनोमेना लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और मोशन। ओके, एक्चुएटर्स क्या है? एक्चुएटर्स परफॉर्म एक्शंस। ओके, सेंसर सेंस करेगा, एक्चुएटर क्या करेगा? एक्शन को परफॉर्म करेगा, सच एज मूविंग और कंट्रोलिंग a mechanism based on commands but do not identify or extract information from objects। then IoT nodes क्या है? IoT nodes are devices in a network that collects, process or transmit data but they are not specifically designed to identify objects like RFID। okay, question number 2, how many layers dot gigabit consist of? okay, so gigabit consists of 4 layers। okay, so physical layer, that is MAC, medium access control layer, then third network layer and application layer। okay, so पहले इसको याद रखो 4 layers। okay, क्या क्या है? फिजिकल लेयर, MAC लेयर, नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ओके, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ये ऊपर ऊपर से थोड़ा याद रख लो। ओके, कुछ नोट थर्ड, अब मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अब याद रख लो कितना कितना लेयर से ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is not a component of cloud computing? okay, so component of a, not a component of a cloud computing, that is local server। ये local server correct answer होगा, it is not a component of cloud computing, local servers। okay, so cloud computing typically consists of the following components, that is client anything, that is end users। okay, end users to access cloud services, example desktop, laptop or smartphones। then services, that is cloud services, that is infrastructure as a service, platform as a service and software as a service। then application, software that runs on the cloud to perform specific tasks for users। okay, then local servers that are not the part of cloud computing because cloud services are the hosted on remote। okay, centralized servers not on local infrastructure। okay, question number 4, which of the following is a distance measuring sensor module, that is SC-SR04। okay, so SC-SR04 is an ultrasonic distance sensor module, okay, that measures the distance to an object by emitting sound waves and calculating the time it takes for the waves to return after hitting the object। okay, and it is commonly used to measure the distances in measuring various applications such as robotics and automation। okay, other option भी यहाँ पे है, this is DHT-22। DHT-22, this is the temperature and humidity sensor। okay, then TLS, then TSL-2591, this is the light sensor module। okay, इसको याद रखो, ये सब सेंसर का ये है, सब ये पूछ सकता है। ओके, DHT-22 that is temperature sensor, TSL-2591 that is the light sensor module, then SC
SR505. Okay, that is the passive infrared motion sensor, that is PIR. Okay, yes, याद रख लो कौन कौन से सेंसर का नेम है ये. ओके, ये बोला था डिस्टेंस मेजरिंग सेंसर, वो that is distance measuring. Okay, that is distance measuring sensor होगा SC SR04. ओके, राइट. एंड ये भी याद रख लो, that is DST22, then TSL2591 and SC SR505. Okay, then question number 5. Which of the following is a component in a typical sensor network? Okay, that is all of the above. Okay, that is sync, gateway and router. तो सिंक क्या है? सिंक यही होगा कि देखो ये सारे के सारे सिंक, गेटवे एंड राउटर इन ए टिपिकल सेंसर नेटवर्क द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर कॉमनली यूज्ड. सिंक क्या है? सिंक ए डिवाइस दैट कलेक्ट्स द डाटा फ्रॉम द वेरियस सेंसर इन द नेटवर्क. इट एक्ट्स एज द सेंट्रल पॉइंट वेयर सेंसर डाटा इज सेंट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और एनालिसिस. देन गेटवे, गेटवे पता है. गेटवे क्या है? इज ए डिवाइसेस that acts as an interface between the sensor network and other networks, such as the internet or local area networks. It helps in translating and forwarding data from sensors to other systems. Then router क्या है? Router are used to direct data packets through the sensor network. They ensure that the data is passed from one node to another node until it reaches the sink or gateway. Okay, इसको याद रखो, सिंक, गेटवे एंड राउटर. This is the component in a typical sensor network. Okay, that is the sink, gateway and the router. That is the following components used in the sensor network. Question number 6. Which of the following sensors are responsible in measuring orientation and angular velocity? Okay, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव. ओके, कोई कुछ नहीं होगा यहाँ पे ना असली यहाँ पे. ओके, पूछा है कि which of the following sensors are responsible for measuring orientation and angular velocity. So none of the above. Okay. Question number 7. ISA 100.11a is a wireless networking technology standards. That is ISA stands for. Okay. So ISA stands for International Society of Automation. Okay. International Society of Automation. So ISA 100.11a is a wireless networking technology standard for industrial automation and control systems. And the International Society of Automation, that is the ISA, a global non-profit organization that focuses on the advancement of automation technology and standards. Okay, so याद रखो, ISA is the International Society of Automation. Then question number 8. Okay, which of the following is not a difference between terrestrial data and center and cloud computing? Okay, that is the storage. Okay, then smart grid is also known as the energy internet. True. Okay, smart grid of course is also known as the energy internet. Okay, question number 10. Can a point of node failure result in a partition of the network in the stationary sensor network? Yes, of course. Okay, the node failure result in the partition of the network in the stationary sensor network. Okay. सो जो आएगा वीक 1 से हम स्टार्ट करेंगे. ये तो काउंटिंग नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट के लिए.
ओके, आईओटी क्या है, इंट्रोडक्शन टू आईओटी, और वीक 1 से वीक 12 में हम करेंगे जब आएगा। तो टिल देन, थैंक यू।